हम जो पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली द मिशन स्टेटमेंट और उसके रिलेशनशिप विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और यूजफुलनेस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं? मिशन स्टेटमेंट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द कोर वैल्यूज, एम्स, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। Mission statement shows the core reason for the purpose of which business exists or stands. ये वो वजह है जिसकी वजह से बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ एक बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट लिखी है सैमसंग की। द मिशन स्टेटमेंट ऑफ सैमसंग इज टू इंस्पायर द वर्ल्ड विद आवर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, दिस इज व्हाट दे डू, products and design that enrich people's lives and contribute social prosperity, creating a new future. This clearly shows a business that is technology related, that has a lot of innovation inside, and that is bringing a lot of new products to the environment. This is how mission statement is. तो मिशन स्टेटमेंट क्यों हम बनाते हैं ऑल द बिजनेसेस, और कैसे ये बिजनेस को अफेक्ट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट गिव्स द सेंट्रल पर्पस ऑफ द बिजनेस, और ये सिंगल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस बिकम्स वेरी क्लियर the purpose for which the business exists. It also helps to motivate the employees. If employees become aware of that the business is very socially responsible and doing something positive to the community, innovating products and services that are going to change this world, etc. So the employees will be very motivated and they'll be really concerned about doing job in that business. For example, the mission statement of Google is um, to gather the world's information and make it universally accessible. तो अब ये एक ऐसी मिशन स्टेटमेंट है कि जिससे द एम्प्लॉइज ऑफ गूगल विल रियलाइज ओके, गूगल इज डूइंग समथिंग सोशली पॉजिटिव टू द कम्युनिटी। और ये इस तरह से मिशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं, और फिर द एम्प्लॉइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जॉइनिंग दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. Similarly, they stimulate the interest of external interested parties, the suppliers, for example. They want to supply those businesses or much into the positive mission statements. And mission statement also is the context for the corporate culture. It shows how business will behave with its employees, with its suppliers, with the government, towards the society, etc. And a mission statement also provides the guiding principle for the business activities. Business makes decision on the basis of mission statement and decide what to do, what not to do on the basis of the statements that they have drawn. But so the mission statement should be very clear, although that is not. The statements that businesses develop are not very clear statement. Uh, I was saying कि ऑल द मिशन स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर नहीं होती, बहुत वेग होती हैं अपने अपने डिस्क्रिप्शन में जो वो दे रही होती हैं, बट स्टिल वी से दे शुड बी क्लियर, कंसाइज होनी चाहिए, अटेनेबल, इंफॉर्मेटिव, बैलेंस्ड। और और मिशन स्टेटमेंट्स को हमें फ्रीक्वेंटली रिव्यू भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक मिशन स्टेटमेंट एक दफ़ा बना दी और फिर आइंदा जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव भी कभी चेंज किए या हमने अपना कल्चर भी चेंज करने की कोशिश की तो वी गो विद द सिमिलर मिशन स्टेटमेंट। इट्स नॉट द केस। वी शुड रिव्यू इट और हमें उसको चेंज भी करते रहना चाहिए। What advantages we obtain from the mission statement? First of all, तो जैसा कि मैंने बताया कि it provides the direction to all the stakeholders, including the directors, including the CEOs, that how should they operate. मिशन स्टेटमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी प्रेजेंस में द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड दैट दे शुड ट्रीट फेयरली विद द एम्प्लॉइज. The organization decide they should pay timely to their suppliers because their mission statement is very social, for example. Mission statement helps to resolve conflicts if there are different point of views in the organization, what businesses should do, how businesses should operate. Mission statement gives a clear opinion that this is our mission and we should move accordingly. Or as I told you, employees are motivated. They are very well motivated towards work in those organizations that have the positive mission statements. Or they also communicate the purpose of the general purpose of the business, the reason because of which the business exists. What are the disadvantages of the mission statement? Bachcho, it's not possible if business is very profit oriented and the mission statement is very purposeful, showing very corporate social responsibility and the ethics, that both go in the same direction. It's not possible.
The directors are usually profit oriented people. They are answerable to the shareholders by the end of year, but they were appointed to earn the profit. If they do not, so they might not be elected again. इसलिए मिशन स्टेटमेंट्स आर मेड, बट वेदर दे आर एक्चुअली फॉलोड, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि a lot of time people won't follow that. So it is ignored by the senior management. उनको लगता है कि भाई हमें तो प्रॉफिट अर्न करना है, they do that. Mission statement is sometimes too vague. When Google says to gather the world's information and make it universally accessible, so it makes some sense. But when Microsoft says to empower every person on earth to achieve more, it's a very vague statement. Being a software business, much into the technologies and much into the artificial intelligence, whether they are actually empowering the people or not, or creating unemployment actually. So mission statements are vague. Sometimes they do not give a clear sense of direction or present a clear point of view. और फिर मिशन स्टेटमेंट में बहुत एम्बिगुअस चीजें स्टेट की जा रही होती हैं, और फिर पीपल डू नॉट टेक इट सीरियसली बच्चों। वो कहते हैं अच्छा मिशन स्टेटमेंट इज अ सोशल वेलफेयर एक्सरसाइज, दिस इज अ सोशल मास्क, दिस इज अ सोशल फेस दैट द बिजनेस हैज डेवलप्ड टू शो इन फ्रंट ऑफ द पीपल। और वो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस करे जैसा कि वो मिशन स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। The question is how mission statements are communicated. Mission statements we can publish in our published accounts. जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें we can write our mission statements. Okay. When we communicate with the shareholders, हम उनको लेटर्स और रिपोर्ट्स लिखते हैं, उसमें मिशन स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। और जो बिजनेस के स्ट्रेटेजिक प्लान्स पब्लिश होते हैं उसमें मिशन स्टेटमेंट्स को लिखा जा सकता है। बिजनेस के अपने न्यूज़ लेटर्स और मैगजीन्स होते हैं, वहाँ मिशन स्टेटमेंट्स पब्लिश की जाती हैं। कंपनी की वेबसाइट पे लिखा होता है जो सारी मिशन स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई है, जो सैमसंग की हमने लिखी हुई है, गूगल की मिशन स्टेटमेंट है या माइक्रोसॉफ्ट की है, ऑल आर रिटन ऑन द कंपनीज वेबसाइट, मैंने भी वहीं से देखी है। ठीक है। और मिशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, मार्केटिंग लिटरेचर में यूज़ करते हैं। और फिर मिशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रेनिंग्स के दौरान सोर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट्स के अप्रेजल्स के टाइम पे वहाँ भी मिशन स्टेटमेंट को पब्लिश किया जाता है ताकि लोग उसको देख सकें और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ दैट लोगों को कंपनी के बारे में दे माइट हैव सम आइडियाज।